Good morning students. Today we are going to discuss the question answer of chapter number 8. Okay. So first question here it is. An object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with examples. See, before giving answer to this question, you should know what is distance and what is displacement. Distance is the length of the path. Length of path of object is called distance. For example, if any object starts its motion from A, it reaches at point B, and from B it reaches at point C. So if anybody asks you to find out distance, then here its path is first AB and then second path is BC. So AB is 3, BC 3 minus 1, 2. So total distance covered by the object will be 5 meter. But if anybody asks you displacement, displacement is not length of the path. Displacement is displacement says position. Meaning of displacement, that means from wherever object has started its motion, okay, from that point how much it is far away, how much it far away where it end its motion. So object has started motion from A and where the object have reached point C. So how much object is far away from its initial position, that is displacement. So formula for displacement is final position minus initial position. Final position is C, that is 1. Initial is 0. So displacement is 1. Displacement is 1. Okay. Now suppose object started motion from A, it reached to point B, from B it reached to point C, and from C it reached to point A. That means D. So count distance. A to B distance 3, B to C 3 minus 1 2, C to D 1 minus 0 1. So distance will be 6. But if I talk about displacement, which is final position minus initial position. Final position at D matlab 0. Initial position is at A, again 0, so 0. So what I am trying to say, displacement can be 0 but distance can never be 0. So that answer only we have to explain here. Yes, an object can have 0 displacement even when it has moved through a distance. This happens when final position of the object coincide with its initial position. What this sentence trying to say, that distance and displacement or displacement can be 0 only if initial position and final position of the object is same. Coincide, that means same. See one example given over here. If a person moves around a park and stand on place from where he started, then here displacement will be 0. Like a man has started motion from this point and after revolving whole circle of the park, if he reach at the same point, then his displacement will be 0. So yes, displacement can be 0, but when the displacement can be 0, whenever initial position and the final position of the object is same, at that time displacement will be 0. A farmer moves along. Numerical right now will not do, we will discuss only question answers. Later discuss numerical also, just for your reference. A farmer moves along the boundary of a square field with side 10 meter. This is a square field, okay. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? Listen, in 40 seconds this farmer complete 1
rotation of this field. So in 40 seconds he have how many minute? 2 minute 20 second. 2 minute 20 second, that means 60 plus 20 80. Question is what? In 40 seconds if farmer complete one revolution of this field, then in 2 minute 20 second, that means after 80 second what will be displacement? तो फार्मर अगर यहाँ से स्टार्ट करता है तो 40 सेकंड के बाद वापस वहाँ आ जाएगा। लिए हमें तो 80 सेकंड है, तो वापस रिवॉल्व करना स्टार्ट करेगा और 80 सेकंड के बाद वापस वो यहाँ पर होगा। तो मुझे बताओ ये फार्मर का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सोच के बताओ। ऑब्वियसली ज़ीरो, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी यही थी और फाइनल पोजीशन भी यही है। सो वी नो व्हेन एवर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, the displacement becomes 0. See, here it is explained. See, that much explanation is not required. See here magnitude of the displacement we want. Magnitude of the displacement we want. So here you have to find out the calculation. Let us do the calculation. Say here it is 2 minutes. Here one mistake I have done, sorry. 2 minute 20 second na, 1 minute 60 seconds. So 2 minute how many second? 120 plus 20 140. Okay, चलो एक बार फिर से 140 सेकंड है हमारे पास। तो फर्स्ट 40 सेकंड में फार्मर जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पहुँच जाएगा, वापस वो रिवॉल्व करेगा तो 80 सेकंड में वापस पहुंचेगा, वापस रिवॉल्व करेगा तो 120 सेकंड, 140 सेकंड हमारे पास है और अब बची सिर्फ 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में फार्मर हाफ डिस्टेंस कवर कर पाएगा। कितना? हाफ, यानी स्क्वायर का वो हाफ डिस्टेंस कवर कर पाएगा। कितना? हाफ। यानी सपोज वो यहाँ से स्टार्ट करता है तो 120 में तो यहाँ पहुँचा और बाकी 20 सेकंड में वो घूम के यहाँ पहुँचेगा। समझे? तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये राइट एंगल फॉर्म कर रहा है तो हमें ये फाइंड करना है। तो हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, ए बी सी। तो पाइथागोरस अप्लाई करूँ तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी इज 10, बी सी ऑल्सो 10, 10 स्क्वायर 100, AC square will be 200 meter. Now if I find out square root of 200, I will get 10 root 2 meter. So this is our answer. In 140 seconds, the farmer will cover 10 root 2 meter distance. Clear? Once again I explain. क्वेश्चन ऐसा था कि फार्मर अगर 40 सेकंड में पूरे स्क्वायर फील्ड का राउंड कंप्लीट करता है तो 140 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो पहले 40 सेकंड में सपोज़ यहाँ चालू करता है तो 40 सेकंड के बाद यहाँ पहुँच जाएगा जहाँ से था। 80 सेकंड में ये 120 और बाकी 20 सेकंड बची वो यहाँ पहुँचेगा।
तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। हमें सिर्फ इतना फाइंड करना है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर, गो थ्रू इट। So let's end this lecture. Bye. Have a nice and safe day.